Hi everyone. In this video lecture series, we are going to discuss the last 4 chapters of class 12 biology NCERT, the ecology and environment part. So in these portions, we are going to study 4 chapters. The organisms and populations, ecosystem, biodiversity and conservation, and environmental issues. I would like to say some of the things before starting. First of all, you don't require a PhD in this topic. Okay. Depth understanding, that is clearing concept, that is important. If you have clear concept, that will help. And also what is important in this chapters as per previous year trend are the definitions. Number 2 is the examples. And any fact. Why the color is not changing? Yeah, fine. Any fact. So I am not going to read this chapter line by line for you. I will obviously just tell you the parts I have highlighted based on the previous year papers. And if you find something where you yourself are reading the chapter, you can highlight the parts which you yourself find it important for the perspective of the exam. So let's start the chapter. We are going to first read organism and populations. So here one thing before starting, Mr. Ramadev Mishra is known as the father of ecology in India. ठीक है, ये याद रख देना, कहाँ भी आ सकता है. Now, let's start the chapter organisms and population. So I have marked this, everything is though not important. So this chapter is saying you two things. One is organism, that is, and another one is population. If you have gone through any environment book like Shankar IS or PMFIS written by Thammineri, the PMFIS book, so there you have learned about the stages of ecology, and I think I have uploaded the videos as well, the organizations. First we have the individual level, that is the species, okay, like this. Then we have population, community, ecosystem, biodiversity, the 5 organizations of ecosystem, of ecology, sorry. So here only one thing is important. Night blooming flowers are generally white. ठीक है. The bee knows which flower has nectar, cactus is horns, and the chick knows who is its mother. Okay, so such statements can come in exam, especially the night blooming flowers one. I hope this is important. But UPSC is now focusing on organisms rather than flowers, so let's see. Now, what is ecology? Ecology is a part of biology. It's a science which deals with biotic प्लस एबायोटिक इंटरेक्शंस. ठीक है, जब सिर्फ बायोटिक होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी, विच इज़ नॉट देयर इन दिस बुक बट इट इज़ रिटन इन एनी एनवायरनमेंट बुक and it came in previous year papers. You can have a watch of that. I'll leave it. So now we have biotic and abiotic. ठीक है, इसको जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं इकोलॉजी. फाइन. Now in this chapter we are going to deal with organism and population only. We are not going to read communities or biomes. Okay, now let's start organism. So a question might come, what is physiological ecology? Ecology at the
organismic level is essential psychological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. ठीक है, easy line है, कोई दिक्कत नहीं है आपको. Now, this graph is important. In what perspective? UPSC might develop a question like this, that what is the range of rainfall? Such question hasn't come in exam yet, but if they like to change the trend, they might. So from this graph you can have the answer. For suppose mean annual temperature in Arctic lies -10 to 0 or something greater than that. So such questions might be framed. So have a look at this graph as well while you are reading the chapter. Okay. And also for the rainfall, the range of rainfall you can see for tropical it's 150, this is 80, 180, and this be 420. So exact data will not be given. They might give the question that is greater than 150 centimeters, something like that. So you have to answer in that way. Okay. Now, regional and local variations within each biome led to a formation of variety of habitats. ठीक है, एक स्टेटमेंट आ सकता है कि regional and local variations. You know what is biome? I have already uploaded a video कि जो climatic regions होता है वर्ल्ड में, ठीक है, उसको biome बोलते हैं. So वहाँ पर जो variations हो रहा है regional and local level में, that is leading to the formation of habitat. What is habitat? Your address. You are seeing this video in a room, that is the habitat for the time being. Okay. Now, our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes. Yeah, that is also true. बहुत सारे microbes होते हैं ना हमारे intestine में, stomach में. They are also helping to digest the food. Okay, so I think up to this it's clear, the important points. Now remember one thing, in India we have 4 kind of biomes. आ सकता है एग्जाम में. What are they? Rainforest, deciduous, here we have the desert and the sea coast. So rainforest, deciduous forest, ये राजस्थान का डिसर्ट और ये हमारा सी कोस्ट. ये तो इंडिया के मैप से हो जाएगा और आप जानते हैं कहाँ रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में है. डिसिडुअस कहाँ है? यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 11 इंडिया बुक. ओके. नाउ ओके, आई वुड लाइक टू से वन थिंग. थोड़ा जो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, ये सब पार्ट से क्वेश्चन आता है. तो जो बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे देखिए ये पिक्चर है, सच बॉक्सेस आर गिवन. So such kind of questions might come in exam. Sorry, what happened? So what I have marked, what are the key elements that lead to much variation in the physical and chemical dependent habitats? So obviously climate is one. Okay, so there's a question, but in a statement given in italics or bold or something like that, that are important. So abiotic and biotic, yes, abiotic and biotic components are responsible for such variations, no doubt in that. Easy one. So what is Nike? Have you remembered? I have already uploaded a video. So Nike is RPS, I told you. One is role, one is position of the species in a habitat. क्या होता है? Suppose एक पेड़ है, we have bird 1 in this region, bird 2 in this region, and bird 3 is this region. Can we say this is a suppose pine tree? So we can say that bird 1, bird 2, and bird 3 both are having I mean 3 of them are having the same habitat, but their location in the habitat is not same, and their role is not same.
here the items this bird is getting to eat, and here the items, and here the items these two words are getting, are not actually the very similar. यहाँ पर एरिया ज़्यादा आइटम तो इसको मिलेगा. So there is a statement that for a particular species no Nike is similar. ठीक है, I mean sorry, for two different species no Nike can be similar. So ये याद रखने, प्रीवियस ईयर में भी है. ये पूरा लाइन दे दिया था कि for कोई रोल, हाँ, रोल इन द इकोलॉजी सिस्टम. When you are seeing role in the ecological system, just mark Nike. This is there in the previous year papers. So now let us have a look on the major abiotic factors. The most important lines are this: the thermal springs and the deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 degree centigrade. ठीक है, so greater than 100 degree centigrade इन दोनों में हो सकता है. In this one, so temperature is the most important ecological relevant. ठीक है, train this one sub zero आपको पता है, and high, this line is also important कि high altitudes greater than 50 degree in tropical deserts and summer. but चलो ये common sense से भी solve हो सकता है. Then let's come to this कि there is no mango tree in temperate countries like Canada and Germany, no snow leopard in Kerala, and tuna fish. So this question might come that there some of the tuna fish are found beyond the tropics. So some found होता है, और some वाला तो correct ही होता है. UPSC का MCQ expert जो सब YouTube में बोलते हैं सब भैया, that is a correct thing. Now what is eurythermal and stenothermal? There are the organisms that can live in a great range of temperature. Suppose 10 डिग्री में भी ये जिंदा रहता है, 90 डिग्री में भी जिंदा रहता है. So they are known as eurythermal. But there are some organisms that can only survive suppose 30 to 40 degree centigrade. इससे ज़्यादा होगा तो वह मर जाएगा. So these are known as the stenothermal. Steno मतलब कम, eury मतलब ज़्यादा. ठीक है, ख़त्म. चलो, then water. Okay, obviously life on earth originated in water and it is unsustainable without water. And freshwater systems also face some problems, water related problems, no doubt in that. Here it is written the salinity of inland waters like river, ponds, it is 5. Okay, the unit is parts per thousand. Yeah, parts per thousand. And then we have seawater, it's 30 to 35. And for hypersaline it is greater than 100. So lagoon जो फॉर्म होते हैं हमने पढ़ा है फिजिकल जियोग्राफी में, क्लास 11 बुक में. So have a look at it. ये याद रख देना. A question might be framed from here. Now let's come to light. Okay, this is important कि in the oceans beyond 500 meters light doesn't reach, at least visible range of light will not reach, right? Some of the invisible light might reach. They actually provide the energy for the organisms present there. Might be some plants present there to grow, but visible light will not reach. Okay, then in case of soil, climate weathering process, how the soil is transported or sedimentary, and how soil developed occurred. Soil composition, grain size, aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soils.
ठीक है, ये याद रखना है हमें, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Now let's come to the concept of homeostasis. Okay, let me tell you, suppose you have gone to some market area in the scorching heat of summer. What you will see that you are sweating. Why is that? You know that your body temperature, your body always try to maintain your temperature, the internal temperature, to 37 degrees centigrade. ठीक है. So for maintaining this 37 degrees centigrade, when you are under the scorching heats in the summer season, what will happen? Your body will sweat and you feel actually cold. So when your body is just trying to going to 40 degrees centigrade and your body is trying to maintain this 37 degrees centigrade by sweating yourself, so that phenomena is known as homeostasis, the maintenance of the internal temperature, and you are known as a regulator. That is, we human beings are actually known as regulator. And there are some organisms. Anything extra written? Yeah, this line is important. All, my god, why this is happening? So all the birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, thermoregulation, osmoregulation. ठीक है, osmotic pressure. The success of mammals is largely due to the ability to maintain a constant body temperature. So this line is very important. This line is also very important. ठीक है. Now okay, I have told you we try to maintain a body temperature of 37 degrees centigrade. The same thing is written here. See, plants on the other hand do not have such mechanisms to maintain internal temperatures. Okay, so plants are not regulators, they are conformers. What do you mean by conform? It means just be like the surrounding atmosphere. See, it is written 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Okay, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. Very important line. Their body temperature changes with the surrounding, ambient means surrounding temperature. In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient area. The osmotic pressure will change. So suppose this is an organism A or a plant. If the outside is 50 degree, it will try to maintain its body temperature to 50 degree. If the atmospheric pressure is 1 atmospheric pressure, the position the higher the thing is, it will try to maintain the body like that. If it is 1 to 2 atmosphere, it will try to balance the osmotic pressure. Osmosis, higher concentration to lower concentration via semi-permeable membrane. So we don't need to go through extreme details of such things. Now we have thermoregulation. Okay, there is another question, why small animals are not found in Arctic or Antarctic region. So here we have a little bit of physics, I should say. Suppose this is a small animal. Can you just see? I just enlarge it. I'm just telling you that you have taken this to some microscope, electron microscope, and you're viewing this. So it has a very small volume but a very large surface area. ठीक है, सपोज दिस इज अ बॉल, थोड़ा वॉल्यूम ही है. वॉल्यूम पता है ना, 3D जब देख रहे हो, सरफेस एरिया जब 2 डायमेंशनल देख रहे हो. आई डोंट नो आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट, बट यू जस्ट थिंक ऑफ दैट कि वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया बहुत है. ओके, सो व्हाट हैपन्स,
the heat easily gets released from the surface area for small organisms. जो बड़े होते हैं उनका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है. So obviously heat will not stay within the small animals in Arctic or Antarctic region. So what will happen? They will unable to survive in such cold atmosphere. Hence we are unable to find small animals or small organisms in Arctic and Antarctic region. Okay. Now during the course of evolution, the costs and benefits of maintaining a constant internal, okay, ये तो ठीक है. Now, if the stressful external condition are localized or remain for a short duration, मतलब सपोज एक ठंडी वेदर आया है, एक महीना रहेगा, तब क्या होता है? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन. ठीक है. सो फॉर माइग्रेशन, and I'm telling you, this suspension comes under hibernation and activation. So what happens in migrations? You have the Siberian crane that will come from Siberia to the Bharatpur Keoladu National Park. This is in Rajasthan. आ सकता है एग्जाम में, NCERT में दिया हुआ है. So have a look at it. Now suspension, we have 2 points. This activation means sleep in the summer season, and hibernation means sleep in the winter season. For hibernation we have the examples of bear, yeah, also snakes, always undergo hibernation in the winter season. And also we have snails and fish that goes to activation to avoid summer related problems. Zooplankton undergo diapause, which means a partial suspension of its development in ponds and lakes. Also bacteria, fungi, lower plants, they suspend their growth as per the seasonal changes. So ऐसे हम नहीं कर सकते, बट ये भगवान इनको ऐसे ही बनाते हैं. So that's it. So from this para, these lines are important, the homeostatic part, and yeah, this graph. So have you seen this graph? Internal level and external level. What do the regulators do? See, they keep the internal level to 37 degrees centigrade in case of human beings. So it's 37 degrees centigrade. ऐसे एक लाइन हो गया. और कॉन्फॉर्मर क्या करते हैं? इंटरनल लेवल and external level ऐसे होता है. So directly proportional to each other, right? And there are some partial regulators as well. कुछ तक तो conformers होते हैं, but फिर regulate कर सकते हैं, उनको partial regulators बोलते हैं. ठीक है. So okay, now let's come to adaptation. I have told you in the very beginning of the video that any definition, example and facts are important from this book for prelims exam. So we can say that adaptation is any attribute. What is attribute? Quality, okay, of the organism that enables the organism to survive and reproduce. In biology, this reproduction word you will get everywhere because this is very important. Sustenance of the next generation, sustenance of the species, I should say, is very important in biology. So the survival and reproduction word are very important. You will see it everywhere. Now this question might be asked, kangaroo rat ये कैसे adapt करता है? So North America, in the North America desert, we have this kangaroo rat. So in kangaroo rat, a reaction occurs, kind of oxidation reaction, in which water is a byproduct, and also it has the ability to store urine so that less water gets wasted. Okay, so this good question can be framed, a good MCQ can be framed from this portion. Kangaroo rat in North American deserts is capable of maintaining all its water requirements
through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products. Khatam. Then this is written about the stomata, the transpiration indices. I hope you are able to write and understand this. I'm not explaining this, but per line. Now what is aliens rule? In cold regions you will see people are having small ears. You know why? So that less amount of heat is released. So so that is known as alien rule. If you come to the majority part, people have big ears, but they are different from them. So that's due to adaptation and evolution. They are also human being. So that's alien rule. Okay. This for all mammals, not only human being. Please be careful about it. Now in the polar seas, aquatic mammals like seals, yes, seals have a thick layer of fat. सील्स देखा है ना, पिक्चर में तो देखा ही होगा. तो ऐसे एक और शील्ड रहता है उनका, ये भी आ सकता है because UPSC is focusing on organisms, the characteristics of organisms. It's not actually possible to know each and every characteristics of an organism. Now I have make a video on acclimatization. That when you go to any mountainous area, we just breathe very fast. So why? Because RBC, hemoglobin RBC actually gets increased. ठीक है, ये पर लिखा भी हुआ है. I'm telling you, increasing, yeah, red blood corpuscles, hemoglobin, and breathing rate gets increased. I told you. So these are the points you have to remember. In most animals, the metabolic reaction enhances all the psychological functions proceed optimally in a narrow temperature range. Yes, and we have discussed it. Hydrothermal fans, temperature for exceed 100 degree centigrade. ठीक है. Desert lizards, they actually come to the heat when they are feeling cold and go to any shade when they are feeling warm. Common sense. Now let's come to population. Here we end our organism discussion. The important lines, the paragraphs you have to mark and have to remember, and if you find something important yourself, so you can go through them, because what is written in boxes, any diagram, any graph, question are actually framed from them, from NCERTs mainly. Also lines are also important, no doubt, that's making the chapter. Now let's come to population. In nature we really isolated. So what is a population? The species in a particular geographical area. So what is important in population? The word area is very important. We measure the population density at most. So that is per unit area. Population per unit area is population density. And I have told you this reproduction thing is very important in biology. So interbreed, both the sexual and asexual reproduction are taken account in this study. ठीक है. Now some very basic definition. Birth rates, death rates, we have studied this in million times in geography book, the human geography, economic geography, human geography class 12 book is there. Now let's see. I have already mentioned this Siberian cranes in Bharatpur. Chlamydomonas is found in a pond. Okay, and population density is not that we just represent in number, it can also be represented in terms of biomass. ठीक है, एनर्जी भी हम कर सकते हैं. Now टाइगर सेंसस कैसे होता है? एक जो उनके मार्क होता है ना एक टाइगर में, सपोज दिस इज अ टाइगर, डोंट गो टू माई ड्राइंग, ये तो कुछ और ही बना दिया मैंने. ओके, सो दिस आर द एंड oh my god, the tiger will kill me by seeing its diagram. So these are the marks which are known as, and the fecal pellets, nakhun.
so they are also important. Now, what is natality? The birth rate. The death rate is mortality. Immigration. इमी मीन्स इनसाइड एंड इमी मीन्स एग्जिट, ठीक है. अंदर आने को इमिग्रेशन बोलता है, बाहर जाने को आप एक स्टेट से और आपका जो टाउन आप रह रहे हो या फिर आप जो विलेज में रह रहे हो उससे बाहर चले गए, वो क्या हुआ? इमिग्रेशन. एंड इफ यू आर कमिंग टू द विलेज इट्स इमिग्रेशन. ऑब्वियसली फॉर स्टेइंग देयर, घूमने के लिए नहीं, फॉर स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग. That's immigration, and that's the difference between immigration and immigration. We have two growth models. The mathematics is not important. What is important? Exponential growth कब होता है? Exponential growth तब होता है जब resource unlimited रहता है. और एक टाइप का ग्रोथ है लॉजिस्टिक. लॉजिस्टिक जब रहता है कि रिसोर्स लिमिटेड होता है. लॉजिस्टिक ही रियलिस्टिक है, ये आइडियल है, ठीक है. रिसोर्स लिमिटेड और कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है. इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेना जो लॉजिस्टिक में आता है. नो ओके. सॉइल माइक्रोब्स क्या करते हैं? सॉइल माइक्रोब्स ये जो ऑर्गेनिक है ना, इसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है. So soil microbes will convert this organic matters to inorganic matters, and plants actually absorb them as their nutrients. Okay. Now you have to remember these things, the terms of interaction. हम कैसे interact करते हैं? Not only we, the entire nature. Suppose the terms, let me tell you the terms. First we have mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism and amensalism. What is mutualism? म्यूचुअलिज्म में स्पीशीज ए का भी भला होता है, स्पीशीज बी का भी भला होता है. अगर एक दूसरे से compete करोगे, म्यूचुअली कुछ नहीं करोगे, तो दोनों का ही खराब होता है. उसको बोलते हैं कंपटीशन. प्रेडिशन में क्या क्या होता है? एक बाघ आया, टाइगर, एक हिरन को खा गया. हिरन के साथ बुरा हुआ, टाइगर के साथ अच्छा हुआ. पैरासिटिज्म, कोई भी एक पैरासाइट आया, ठीक है, आपके सेल में घुस गया, उसके लिए तो अच्छा है, उसका खाना मिलेगा. आपके लिए आपको क्या होगा? आप डिजीज्ड हो जाएंगे, you're gone. So that parasitism. What is commensalism? एक का अच्छा होता है and other doesn't care. उसे कुछ नहीं होता, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है. amensalism, एक का बुरा होता है, एक का कुछ नहीं होता है. Okay, now we'll discuss this with examples. We have competition, parasitism, brood, okay, that is important, commensalism, mutualism. ठीक है, सब पढ़ लेंगे, कोई नहीं. So in this book they are starting with predation, so let's start with it. So as predation I have told कि एक टाइगर ने एक हिरन को खा लिया, टाइगर के साथ अच्छा और हिरन के साथ बुरा हुआ. So what are the lines important here? The herbivores, they are in a broad categorical context, not different, not so important context. Okay, now see the exotic species. I'm giving an example. In Australia in 1920, a cactus tree, just they had grown rapidly in Australia. Throughout the Australia they caused havoc. Then moth was introduced and this cactus got killed by this moth. Okay, so what is this cactus for Australia? Invasive species or exotic species, जो वहाँ पर नहीं था, बाहर से आया, havoc कर दिया. In most of the cases invasive species are bad for the inhabitants there living there. Okay, so this example is done.
Now another example is that suppose there is an organism, this is an organism, and it is dependent on 1 to 3 organisms. Okay, it is eating this organism, this organism, and this organism. Suppose they are A, B, C. Suppose this, I have removed this now. ठीक है, इसको उठा के कहाँ पर सेंड कर दिया. now क्या होगा, ये A, B, C इससे बचने के लिए चला जाता था, भागता था. पर अब क्या हुआ, ये तो चला गया. अब ये लोग खुद कंपटीशन करेंगे, मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे यहाँ पर रहना है, सब मारे जाएंगे. Okay, so what is the example? In the rocky intertidal communities of the American Pacific coast, the starfish pisister, remember this, pisister is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates became extinct within a year because of interspecific competition. Okay. Now what's the next line? Yeah, सपोज एक टाइगर है और डियर, बहुत सारे डियर है. ये टाइगर एक दिन में ही सब डियर खा गया, ओवर एक्सप्लॉइट कर गया. ये टाइगर 10 दिन पर, आफ्टर 10 days will it be alive? No, it will also get killed. इसको खाने के पास कुछ नहीं है, क्या खाएगा? सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इस बात, सो ज़्यादा मत खाना. कैमोफ्लेज होता है, फ्रॉग वगैरह कर लेते हैं. Now some poisons are okay. Now I'm giving a, I am just requesting you just Google this. It starts with C, like CH something, I forgot to write here. I'm telling you. So you know that there is a kind of butterfly which is known as monarch butterfly. So what does this monarch butterfly do? If a frog tries to eat it, ये frog है और ये butterfly है. Don't laugh at my pictures, it's my humble request. So ये इसका जीभ है, ये खाने गया, ये एक मटेरियल छोड़ता है, कुछ केमिकल, इसका एक नाम है, ये देख लेना. ठीक है, CH समथिंग, जस्ट गूगल इट कि मोनार्क बटरफ्लाई का क्या केमिकल रिलीज होता है, यू विल गेट इट. C से कुछ स्टार्ट हुआ था, मैं भूल गया. Some is poisonous and yeah. So monarch butterfly actually is a distasteful to its predator because of a special chemical present in its body. अब ये केमिकल कहाँ ये गेन करता है, जब कैटरपिलर स्टेज में होता है. ठीक है, एक पॉइजनस वुड में रहता है, उससे गेन करता है. So this monarch butterfly example is very important. A good question might be framed, and see the name of the chemical from Google. It's my humble request. Now 25% of all the insects are known to be phytophagous, that is feeding on plant sap and other parts of the plant. Fine. Now calotropis is actually, if you see some fields, you will able to see them. ठीक है, ये पर ना कोई गोट जाता है, ना कोई भेड़े जाते हैं. शिप, गोट, दे विल नॉट गो, बिकॉज अगर ये खा ले ना इनको, इनका कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा. बिकॉज दिस कैलोट्रोपिस आर रिलीजिंग प्रोडक्ट विच इज पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. So they will not eat it. ठीक है. Now definition. What is competition? And you can have a look at the source of the plants. We get this medicinal things: nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium. Okay. We have also reserpine from Riboflavia species. We'll see this in another chapter. So what is competition? This question can be framed at, as per population ecology, which one of the following is the best definition of competition? So competition means the power of an organism will decrease. Okay, there will be many options that some get extinct, some winners, some losers. No,
As you have studied in पॉलिटी क्लास 11 बुक कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का पावर लिमिट करना, ठीक है. ऑल्सो रिटन इन लक्ष्मीकांत एज वेल. सो सिमिलरली कंपटीशन का काम होता है एक का पावर डिक्रीज करना, पूरा ख़त्म मत करना, ठीक है. यही लिखा हुआ है. is best defined as a process in which fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. Okay. Now this one. See, there is an island which is named Galapagos Island. There are some tortoise. ये अच्छा ड्रॉ किया है मैंने. ये इजी भी है. So and there are goat. ये नहीं होगा मुझसे, ठीक है. Suppose this is a goat and many goats are introduced here. So what will happen? यहाँ पर घास है, ये भी घास खाता है, ये भी घास खाता है. इसका मोबिलिटी बहुत फास्ट है, और ये तो कछुआ स्लो स्लो स्लो. But always remember, slow and stages wins the race. When you're preparing for this exam, you should be a tortoise. मतलब उतना, it depends on time when you have started. Leave it. And we have goat. तो गोट पूरा खा जाएगा और ये तो मर जाएगा. यही हुआ था. Also there is another term which is known as competitive release. Suppose they are now concentrated in a very less area. यहाँ पर गोट है, यहाँ पर गोट है, यहाँ पर गोट है, यहाँ पर गोट है, कुछ कछुआ यहाँ पर जिंदा है. Okay, some of the tortoise are just staying here. So now what will happen if I just remove these goats? फिर भेज दिया, I have again sent them to some distant places. What will happen? From this portion they will expand. This kachuas will expand. This tortoise will expand. This is competitive release. Okay. There is another known as resource partitioning. I have told you already. The example of when I was teaching you Nike, I was telling you this is bird 1, bird 2, bird 3. क्या हुआ है? ये सब ने ठीक कर लिया कि मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा. दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज. ओके. सपोज ये पैरट है, ये क्रो है, ये कोयल है, लाइक दैट. Hence this is what resource partitioning, कि सब ने पार्टीशन कर लिया. ये भी हो सकता है कि सपोज बर्ड 1, बर्ड 2 और बर्ड 3 जो है वो यहाँ पर नहीं रहते हैं. बट बर्ड 1 में बोला कि मैं 2 बजे यहाँ पर आऊँगा, बर्ड 2 ने बोला मैं 4 बजे आऊँगा, बर्ड 3 ने बोला है कि ठीक है मैं 6 बजे खाने आऊँगा. सो ऐसे बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है. नाउ पैरासिटिज्म. पैरासाइट्स क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होता है जो सेल को अटैक करता है. सिर्फ सेल नहीं, we'll read it now. Suppose we have a human, I mean जो host होता है ना, उनके चिपक रहता है, वही पैरासाइट होता है. So parasites, there are some characteristics: evolved special adaptations such as loss of unnecessary sense organs. They really don't have any digestive system. They have high reproductive capacity. हाँ, ये भी important है. और एक सक्कर होता है, मैंने यह ड्रॉ भी किया एक सक्कर. So human liver fluke depends on 2 intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. ठीक है. This line is very important. Trematode parasite, and majority of the parasites harm the host. And this is very important for prelims. एक्टोपैरासाइट होता है जो सरफेस एरिया के ऊपर रहता है, और एंडोपैरासाइट होता है कि अंदर चला जाता है. सपोज लीवर में जो बोला था. नाउ फॉर in case of NCERT only, if they are framing the question here and want you to get +2 from this question, they will just give a match the following and host. First can be lice, then tick, then coppock,
Coopod you will read in PMFI's book. There is a diagram, most probably in chapter 5, right hand side. You will see the food wave from in marine ecosystem. There is Coopod. So lice, tick and Coopod. Lice is human. Human खाता है rice, so rice से lice. टिक होता है डॉग एंड कोपोड होता है फिश. ठीक है, ये याद रख देना, 2 मार्क्स मिल जाएगा ये से. एंड कस्कूटा. कस्कूटा तो एक प्लांट पैरासाइट है. ये क्लोरोफिल लूज कर चुके हैं एंड लिव्स इन द प्रोसेस. हाँ, न्यूट्रिशन जो होस्ट के ऊपर रहता है. सपोज ये एक पेड़ है, इसके साथ जुड़ा रहता है. प्लांट ही है ये, बट प्लांट पैरासाइट बोलते हैं. नाउ एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट इज, मैंने बोला ये रिवर फ्लो जो वगैरह है वो एंडोपैरासाइट है, अंदर रहता है. नाउ व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? इट इज फाउंड इन बर्ड्स. ठीक है, बी है बर्ड्स ब्रूड, याद रहेगा. सो कोयल ने अपने देखा है ना, कोयल क्या करते हैं, अपने एक को क्रो के नेस्ट में दे आता है और कौवा इसका बच्चा समझ के पैदा करता है. ओके, so that is brood parasitism. Now what is commensalism? It is plus 0. एक का तो भला होता है, दूसरा डोंट केयर. एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्चिड का. हाँ, एंड देयर इज अनदर वन. सपोज देयर इज कैटल. एक गाय है. गाय के अब देखिए कि बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आता है, ये जहाँ पड़ जाता है. तो यहाँ पर लिखा एग्रेट. एग्रेट मीन्स बगुला. ठीक है, सो बगुला जस्ट विल गो देयर. जब ये काऊ चला जाता है, इंसेक्ट तो रह जाता है, इसको खा लेता है. सो कैटल का कुछ हुआ नहीं हुआ. सो ये एक इंटरेक्शन है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड देयर इज एनीमोन. तो सी एनीमोन होता है जो टेंटेकल्स रहता है, थोड़ा काटा नोकीला कुछ ऐसा रहता है. इसमें क्लाउन फिश रहता है. क्लाउन फिश. सो अगर ये ख़त्म हो जाए ना, ये टेंटेकल्स, ये वाला सी एनीमोन सो ये क्लाउन फिश भी ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ वेरी सो इसको क्या होता है, क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है. मुझे एक बात बताइए, सी एनीमोन का कुछ होगा इससे? नहीं, इट विल नॉट किया. सो 0 फॉर सी anemone. I'm extremely sorry. Sea anemone and clownfish. Yeah, it's getting a positive impact. I think they haven't written commensalism in this chapter. Why, I don't know, but I can cite you an example. Suppose there is a big tree. This is written in PMFI's book, and we have grasses. ठीक है, सूरज. ठीक है, इस ट्री को तो बहुत सारा सनराइज मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है. सो इस इंटरेक्शन में इसका तो बुरा हो रहा है, और ये प्लस सॉरी ये तो इसको कुछ नहीं हो रहा है इस इंटरेक्शन में. सूरज तो सबको इक्वली मिलना चाहिए ना, बट इसके लिए इसका बुरा हो रहा है. इस इंटरेक्शन के लिए इसका कुछ नहीं हो रहा. फॉर द ग्रास द ट्री doesn't get affected. Fine, so that's the point. Now let's come to mutualism. This is very important. दो ही चीज़ important है, ये wasps और fig वाला interaction, और bee और Mediterranean orchid. एक पी से क्या नाम होता है साइंटिफिक दिया हुआ है, वो दोनों इम्पोर्टेंट है. देखिए, फिग इज पॉलिनेटेड. पॉलिनेशन आपको पता ही होगा बाय वास्प्स.
wasps laying eggs in a fig fruit. So fig flower is pollinated by wasps. Remember this. And yeah, this fig will not get pollinated by any kind of organism. Okay, this is very important. And this question has came in previous year papers twice, I think so, कि ये symbiotic association lichen किसके किसके होता है. एक होता है फंगस, algae, cyanobacteria, ठीक है, blue green alga, whatever you say. So that's it. You have to remember this line, very important. And mycorrhiza is the symbiotic association between higher root plants and fungi. ठीक है, fungi and higher root plants. You can also go through the working, what actually they do, the nutrients and all. Yeah, as I'm telling you, a given fig species can only be pollinated by its partner wasp species and no other species. Ant लिखा हुआ है बहुत कुछ, देख लेना. और ये ऑर्चिड बहुत स्मार्ट होते हैं. इनको बुद्ध बनाता है वाड़कर बी को. इसका एक पेटल है ऑर्चिड का, ये लोग सोचते हैं कि ये रानी मधुमक्खी है. So ऐसे पॉलिनेशन हो जाता है. So that's it for the chapter, guys. I hope you have enjoyed. So okay, in the next chapter we are going to have ecosystem. So we have done the chapter 13 with ease, and these are the important lines. I hope the concepts are also clear to you. The lines are very important, I have marked, and if you find yourself some lines you are perceiving that they are important for the sake of the exam, mark it, no issues. Okay, thank you. So let's go to the next chapter now. So hi everyone, in this video I am continuing it. So we are going to study एक मिनट है. हाँ, in this chapter we are going to study ecosystem. We have ecosystem structure and function, productivity, where we will learn about NPP, GPP, decomposition, energy flow, ecological pyramids, ecological succession, nutrient cycle. In this book we have only carbon and phosphorus, and ecosystem services. Okay, so let's see the important lines. What are the components of the ecosystem? We have 4 components. First we have the productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycle. I repeat, productivity, PDEN, pending, so productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycle. So what is productivity? Okay, let's say suppose we have a plant. ठीक है, this is sun. With the help of sunlight plus carbon dioxide and water, it forms glucose. ठीक है, and releases what I'm doing, man. Yeah, it will. Okay, yeah, I'm right, sorry. Photosynthesis. This is the reaction of photosynthesis, right?
C6H12O6. So with the help of sunlight, carbon dioxide and water vapor, moisture, there are byproducts as well, but these two are main. So we'll see this carbohydrate formed as biomass formed by the plants with the help of this process, right? The organic matter. So what is primary production? Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis, as I have discussed. So gram per meter square is the unit of primary production. And what is primary productivity? When we just attach the word rate with it and we actually measure in year. So primary production, the productivity, the rate of primary production is productivity. ठीक है. Now what is gross primary productivity? This is gross primary productivity. The amount of biomass produced per unit area per year. That is the definition of primary production, the primary productivity. So that is actually gross primary productivity. So as we have defined productivity, it is same as the gross we actually mean it as the gross primary productivity. What is net primary productivity? Obviously some of the energy will be utilized by the plants for the purpose of respiration. So that biomass of the energy will be subtracted from GPP, and hence that left one is NPP. This one that is written, and here the same thing is written. Okay, what is secondary productivity? इन प्लांट्स को तो कोई खाएगा, हम खाते हैं और भी जो जानवर है वो खाते हैं, ठीक है, other organisms will eat it. Hence we also make some organic substance by eating them. That is known as secondary productivity. The unit is same. Always remember the unit. Unit is very important. ठीक है, ये यूनिट देखकर आप definition बता दोगे. Now this question has come in prelims and previous year papers. It's better you remember the values कि 170 billion tons ऑर्गेनिक मैटर बायोस्फीयर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वी ऑब्वियसली टॉक अबाउट नेट, क्योंकि वही हम कंज्यूम कर सकते हैं, वही हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. हार्बीवोर्स भी बोल सकते हैं जो पूरा वेजिटेरियन होता है, बट चलो हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, वो ठीक रहेगा. ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने खुद का खाना खुद बना लेता है. हम तो नहीं है वो, हम तो उन पर डिपेंड है. सो दैट इज एनपीपी. नेट प्रोडक्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, it is 170 billion tons, and for oceans it is only 50 in the entire biosphere, and for oceans it is only 55 billion tons of it. So can we say the productivity in oceans, the NPP in oceans, is less than that of the entire biosphere of the land surface? So ocean का bio productivity land से कम होता है. Amazed, right? But that's the truth. Yeah, that is only written here. लाइट तो वहाँ पर कम जाता है ना, हमने देखा था पिछले चैप्टर में. That is a good reason. Now let's come to the topic of decomposition. Now suppose we have a tree, ठीक है. A leaf will fall, ठीक है. सूखा पत्ता है, इसको हम डेट्रिटस बोलते हैं.
Now earthworm will come here. Earthworm are known as the friends of farmers. इसको फ्रैगमेंट करता है, ब्रेक करता है, इसको इस प्रोसेस को बोलता है फ्रैगमेंटेशन. इसमें से कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा सॉइल में, उसको बोलते हैं लीचिंग. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो फंगाई और बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया और कुछ फंगाई, डेट्रिटिवोर्स, इन सबको डेट्रिटिवोर्स बोलते हैं क्योंकि ये डेट्रिटस को खाते हैं, डिकम्पोज करने के लिए हेल्प करता है. दे विल रिलीज काइंड ऑफ एंजाइम. विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ये और भी टूट जाता है, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म एज रिटन हियर. देन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन. ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है. ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस का कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, ह्यूमस का कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है कि which of the following are the characteristics of humus, only one, only two, three, none, ऐसे कुछ आ सकता है. सो डार्क कलर्ड एमॉर्फस है. अगर एमॉर्फस है तो कोलॉइडल. सो कोलॉइड एंड एमॉर्फस आर इंटरलिंक्ड. You have studied colloidal chemistry, I hope so. And resistant to microbial action and slow rate decomposition होता है. पहले माइक्रोब्स नहीं आ सकता है यहाँ पर ह्यूमस को डिकम्पोज करने के लिए. After so much of try, they are able to decompose it and it has a large amount of nutrient within itself. Humus soil के लिए बहुत अच्छा होता है. अब अगर तोड़ दे इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोब्स जब तोड़ देते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलता है. ह्यूमस इतने आसान नहीं आता है, बट चलो वी हैव टू स्टडी इट. नाउ डिकम्पोजिशन और एक होता है और एक प्रोसेस होता है एनारोबिक. सो डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑक्सीजन चाहिए फॉर डिकम्पोजिशन. फॉर O2 इज मस्ट. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ गुड प्रीलिम्स क्वेश्चन. In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. ठीक है, अगर लिग्निन और चिटिन है डिकम्पोजिशन रेट को टाइम लगेगा. ठीक है, सपोज कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें लिग्निन और चिटिन ये दोनों केमिकल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है. देयर डिकम्पोजिशन विल टेक अ लॉन्ग टाइम. अगर हम जैसे है कोई शुगर कंटेंट वाला, ठीक है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे नाइट्रोजन है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर है, तो इनको खा जाएगा वो एंजाइम. ठीक है, इम्पोर्टेंट है. Now this condition is also important. Warm and moist environment favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition and leading to organic matters. If you have studied methane from PMFI's book or any other book, you will see that methane is formed under anaerobic condition. So that's why I have written methane here. So decomposition requires warm and moist environment, warm and moist, और ऑक्सीजन चाहिए. So this kind of conditions question might be framed. ठीक है, ये डिकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट है. और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में DFC डेट्रिटिस फूड चेन, ये वाला प्रोसेस ही ज़्यादा फेवरेबल है. और एक्वाटिक में उल्टा. विल रीड अबाउट दिस इन दिस चैप्टर ओनली. नाउ एनर्जी फ्लो. सो ये हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम मैंने बोला है 100 डिग्री चला जाता है. ठीक है, तो छोड़ दीजिए. ये वाला देखिए, सन है और यहाँ पर एक पेड़ है. ये वाला डायग्राम मैंने बहुत ड्रा किया है ना. फ्रॉम दिस सन रेज विल कम टू दिस tree or the plant, whatever you say, but 50% is photosynthetically active radiations. ठीक है, मतलब एक प्लांट इसका 50% थी, लेस देन 50%. photosynthetically active radiation
इसका एब्जॉर्व कर सकता है बट इतना भी नहीं करता. इसका 2 से 10% ये प्लांट एब्जॉर्व करता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स फॉर प्रीलिम्स. क्वेश्चन यहाँ से ही फ्रेम होगा एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है. सो 50 ग्राम आता है, इसका 2%, 1 ग्राम ये लेता है ये ट्री. फिर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस सब नहीं ऑब्जर्व कर सकता. ठीक है. नाउ इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर्स आर herbaceous and woody plants. Mark this please. And the producers in an ecosystem are various species like phytoplankton. Okay, we know this. Okay. And this line, death of the organism, we have seen this in decomposition कि एक पेड़ से पत्ता गिरा, सूखा पत्ता. So death of the organism is the beginning of the detritus food chain. ये तो मर गया जैसे ये पेड़ से डिटच हो. And also if we die, ठीक है, okay, let us leave, let a small frog die because amphibians are in the verge of extinction. You know, amphibians सबसे जल्दी extinct हो रहा है. Important line है. I will teach you this in the 4th chapter 16. So suppose a small frog unfortunately dies. Now इसको क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, ये फंगी बैक्टीरिया आर्थवर्म वगैरह आएगा, इसको खाएगा. इसमें तो बहुत शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है. फिर ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन हमने सब कर लिया. सो दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट. डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द detritus food chain. Now let's more discuss not so important. What is grazing food chain and detritus food chain? ग्रेजिंग फूड चेन मीन्स जो प्लांट से शुरू होता है. डेट्रिटस फूड चेन जो डेट्रिटस से शुरू होता है, एक डेड ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट से शुरू होता है. ठीक है. ये लिविंग से शुरू होता है. नेक्स्ट सेम लाइन. एंड या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. इन टेरेस्ट्रियल DFC is greater than GFC. Detritus food chain is greater than the grazing food chain. And in aquatic, yeah, that's the fact. You have to digest. I have also digested many things, you know, while reading this 4 chapters. I don't know many things. कि ये common sense है. Because I was astonished that 71% of carbon lies in ocean and 1% of carbon is there in atmosphere. We'll read this. That's interesting. And yeah, this decomposer is also known as saprotrophs. Now, what is the food wave? You know, the food chain food wave. I'm not discussing it. बच्चों का टॉपिक अगर ना पता है, अगर भूल तो सब जाता है. Not a big issue. That's human nature. If you are from engineering background, and I really have to assume that you know food wave, you have remembered everything. I shouldn't, because many of the people like me are not interested in biology. His or her childhood, I was not interested. मुझे अच्छा नहीं लगता था. Now forget it. When any organism diet is converted detritus that serves as an energy. ठीक है. I have discussed it. Now what is standing crop? Standing crop is nothing. You have gone through the ecological pyramids and all. Suppose it has a biomass at a particular time per unit area. ठीक है. हम dry wet लेते हैं. Then this is known as a standing crop. Standing crop. A particular certain mass of the living material at a particular time is called a standing crop. Now 10% law is only applicable to GFC. GFC में क्या होता है? Suppose there is a plant, mini plant. It has 100 joule of energy. In the next stage it will have 10 joule and this will get only 1 joule. Suppose this is a deer and this is a tiger. And ठीक है. सपोज 1000 जूल का एनर्जी आया सन से. ये प्लांट कितना एब्जॉर्ब करता है पता है? इसका 1% एब्जॉर्ब करता है. 1% ओनली. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स.
then it will go to the grass. So 100 जूल तो ये ग्रास के पास है, फिर ये हिरन आया इसको खाया, कितना हुआ 10 जूल, 10 जूल हिरन के पास गया, फिर ये टाइगर आया हिरन को खाया, इसके पास कितना जाएगा 10% ऑफ इट, 10% ऑफ 10 जूल कितना होता है 1 जूल, सो 1 जूल टाइगर के पास है. Should I repeat? 1% of sun's energy just actually utilized by these plants. This is a fact. You'll say this. And then 10% of this 100 joule, that is 10 joule, will go to the deer. And from this deer, 10% of 10 joule, that is 1%. This is DFC में this 10% law is not applicable. Now ecological pyramids. Do you know what are ecological pyramids? I don't want to actually discuss this. खुद पढ़ लेना. Okay, let me discuss. Suppose मैंने जो डिस्कस किया, this is a pyramid of number. बहुत सारे grasses, plants हैं. Then we have deer. Then we have tiger. ठीक है? As I have discussed. So these are just telling the numbers when we are studying this ecosystem, but this number ecosystem can also be inverted. This is known as upright ecological pyramid. We have three kind of ecological pyramid. One is pyramid of number, pyramid of biomass, and pyramid of energy. So pyramid of number actually in each trophic level is एक level को trophic level बोलते हैं, ठीक है? Each trophic level we actually denote the number in the pyramid of numbers. And this is pyramid of biomass. Biomass मतलब kg per meter square कितना है, ट्राई वेट हम लेते हैं. This is a given. You don't have to remember such things. No. So यहाँ पर ग्रास का बायोमास दिया होगा, यहाँ पर डियर का दिया होगा, यहाँ पर टाइगर का दिया होगा. सपोज टाइगर को अगर कोई खाता है, डायनासोर है सपोज, सो उसका बायोमास दिया हुआ है, ठीक है. एंड इट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड. देखिए ये उल्टा है, ये फाइटोप्लैंक्टन है इन पॉन्ड्स और ये जू प्लैंक्टन है. नहीं मैंने शायद उल्टा ड्रॉ किया ना, नहीं ठीक है. Now as I was saying, as I was telling, 1% of sunlight will just get absorbed by those producers. Then deer खाए इसका 1%, इसका 1%. I have already discussed it. It now a cakewalk for you. This line is important. ठीक है. Make it true. Okay, this line is very important. कि ये species actually नहीं बोल रहा है. These ecological pyramids were not studying about the levels, the trophic level. This is actually a functional level. ठीक है, ये line direct आ सकता है एग्जाम में. Now, yes, important. PMFIS में भी ऐसा लिखा हुआ है. Pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of phytoplankton. No doubt. फाइटोप्लैंक्टन तो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, इनको खाता है. जू प्लैंक्टन थोड़ा बड़ा होता है, बहुत सारे होता है. बट फिश तो कम होता है, बट इसका बायोमास बहुत है. सपोज ये छोटा फिश बहुत बड़ा शार्क है, 1-2 रहता है, इसका बायोमास और भी ज़्यादा होगा. सो इन एक्वाटिक इकोसिस्टम हैव यूजुअली inverted biomass ecological pyramid. Important. Now let's come to the pyramid of energies. Yes, is always upright because ये तो लॉस होगा ना, 10% लॉस होगा तो कम हो जाएगा एनर्जी, खत्म. Now these are some of the limitations कि we don't consider DFC, which is very important limitation. And same species we can't use in 2 trophic levels. That is also a limitation. थोड़ा पढ़ लेना. Ecological successions. Ecological successions, let's discuss. Suppose we have rocks here, ठीक है. ये थोड़ा लाइकन वगैरह आ गया. लाइकन किसका किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है मेरे दोस्त?
फंगी, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फिर ये सॉइल हो जाएगा, फिर थोड़े छोटे प्लांट आएंगे, फिर बहुत 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 एक फॉरेस्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, सपोज देयर इज़ अ बैरन लैंड, ओके, देयर इज़ अ बैरन लैंड, it has many rocks, so lichens will come, they will die, they will release some acids. With the help of which soil will form. Soil formation we have studied in class 11 geography book. If you haven't studied, please go and study it, important hai. Then what will happen, some small plants will get, and with advent of time we'll be able to watch a forest. Now suppose this forest gets burned, ठीक है, कुछ हुआ, कुछ फॉरेस्ट फायर वगैरह हुआ, then the soil will be there, fine. Now from this soil again what will happen, soil तो है, छोटा छोटा प्लांट है, फिर एक फॉरेस्ट हो जाएगा. दिस, इसको क्या बोलते हैं, एक सक्सेशन हुआ ना, रॉक से लाइकन आया, लाइकन से सॉइल हुआ, सॉइल से छोटा प्लांट आया, एक फॉरेस्ट हो गया, फिर क्या, फॉरेस्ट बर्न हो गया, सॉइल था. दिस इज अ सक्सेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. सक्सेसिव वेज में एक एक सक्सेशन, ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल your father, his father, then your grandfather's father, that's a succession. First grandfather's father came, then your grandfather came, then your father came, then you, right? So that's continuing, and your son or daughter, the next successors, and you will be the preceder. So this system, where it starts from any new thing, new substance, not soil, that is known as primary success. प्राइमरी सक्सेस. एंड इफ सॉइल इज प्रेजेंट, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, ठीक है, फिर हुआ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन ईजी है ना, उतना टफ नहीं है. और हाँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कुछ भी एक्सीडेंट इस मिडिल में भी हो सकता है, पिछले स्टेज में चला जा सकता है. That's a characteristic. I have marked these things. I have only marked such things I have discussed, so I am not telling you. Yeah, one thing. Tell me one thing. Which process will be quicker and which process will be slower? Obviously, primary succession बहुत स्लो होगा ना, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन ही नहीं हुआ. और सेकेंडरी सक्सेशन क्विक होगा, बिकॉज सॉइल इज ऑलरेडी देयर. That's why people say make your base as strong as you can. For this exam, making base strong is most important. Making the static part as much powerful is important. ठीक है. Now, ठीक है, I have discussed all the things. Okay, we have a kind of succession which is known as Hydrax succession, and we have Xerax. No, the spelling I have written wrong. if hard होगा. Xerax succession and Hydrax succession. For Hydrax succession, the starting point is a water body, and it will end in a forest. We can say mesic. ठीक है, mesic forest ही होगा. और ये Xerac है कोई डेसर्ट ड्राई एरिया जिससे एक फॉरेस्ट होगा. बेसिक मतलब मीडियम वाटर कंडीशन, ये फॉरेस्ट को ही समझा रहा है यहाँ पर, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज फॉरेस्ट. Okay. So now what do you mean by pioneer species? The first species, ठीक है, on rocks, here it is lichen. And
Suppose for aquatic, we have phytoplankton. The first species, ठीक है, ईजी है, और जो अल्टीमेट होगा वो फॉरेस्ट होगा. फाइट ओवर क्लाइमेट, सेकेंड फॉरेस्ट. यस, पढ़ लेना ये सब मेरे दोस्त, आसान है. जो मैंने डिस्कस किया अगर ये याद रहे, सो जस्ट हैव अ रीडिंग. यस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. यस, में से की होगा फॉरेस्ट ही होगा. ठीक है, ख़त्म. चलो अब न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ लेते हैं. लेट अस स्टडी about the nutrient cycle. First we have the gaseous cycle, and another one is the sedimentary cycle. So what is a nutrient cycle? Water cycle is a kind of nutrient cycle, or the biogeochemical cycle. You know what how does water cycle work? I am not explaining it. Let us directly move on to the carbon cycle. Remember one thing, we have two kind of nutrient cycle. One is gaseous, the reservoir being atmosphere, and for sedimentary cycle the reservoir is the earth's crust. ठीक है, याद रख देना. Let's go to carbon cycle. So what happens in carbon cycle? Living plants or animals will die. They will get decomposed in the soil. They will find in fossil fuel formed, coal, petroleum, like that. These things will dig it up. We'll just burn it. It will go to air. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, फिर मरेंगे, फिर नीचे जाएंगे. Also there are many processes, the carbonates, in which also there is formation of this H2CO3 in oceans. Okay, I'm just telling you how does carbon cycle work. But what is important here is this facts. When you study the composition of living organism, carbon constitutes 49% of dry weight of organisms, which is next to water only. Fine. If we look at the total quantity of global carbon, 71%, I'm telling you, 71% of carbon is dissolved in oceans and 1% in atmosphere. Yes. And this you have to remember, कि 4 into 10 to the power 13 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis. ठीक है, और कुछ important नहीं है ऐसे. Then phosphorus cycle, I am explaining you what happens in phosphorus cycle. Weathering, this question directly came in pre. Which cycle requires weathering of rock? So what happens, there are some rock materials which are known as phosphate rock. ठीक है, weathering will take place. They will just, पहाड़ भी होता है, इनमें भी फॉस्फेट रहता है. इसमें इस सॉइल में चला जाएगा, सॉइल से कुछ माइक्रोब्स हेल्प करेंगे, प्लांट में चला जाएगा, प्लांट से एनिमल में चला जाएगा, फिर ये प्लांट मरेगा, फिर सॉइल में जाएगा. और क्या होता है, जो एक्सेसिव पॉइंट है कि अर्थ क्रस्ट सपोज यहाँ से राइज करके सारे सॉइल में है, फिर ओशन में भी जाएगा, देन ये पहाड़ फिर से फॉर्म होंगे, तो फिर फॉस्फेट हो जाएगा ना. यहाँ पर जम रहा है, इस सॉइल में जम रहा है, इस ओशन के बेड में जम रहा है. कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, लाखों साल बाद, जैसे हिमालय फॉर्म हुआ, फिर ये जो क्रस्ट होगा ना, दोनों प्लेट टकरा गया, एक फॉर्म हो जाता है. हमने पढ़ा है ज्योग्राफी क्लास 11 में, तो देख लेना थोड़ा. सो व्हाट हैपेंस, सॉइल सॉल्यूशन, देन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, मैंने बोला हम खाएंगे, फिर डेट्रीटस नीचे जाएगा, फिर सॉइल सॉल्यूशन में आएगा. बहुत इजी है ये सब, थोड़ा पढ़ लेना है. सो फॉस्फोरस इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, सेलुलर एनर्जी इसमें रहते हैं. और
कैल्शियम में जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये शेल वगैरह बनाते हैं, करंट अफेयर्स मैगजीन में भी है ये सब. They will make shell, so they also can make it with the help of phosphorus. Sorry, yeah, phosphorus we are studying, not calcium, phosphorus. Sorry. Now with the same thing is written here as I have discussed, and the difference between carbon and stat, through rainfall H2CO3 might come, like H2SO4, HNO3, acid rain. This actually forms acid rain, but this can also come. But phosphorus, there is no such downfall of phosphorus from the clouds. And gaseous exchange, ये तो है ही sedimentary. Ecological service बहुत important नहीं है. What are the important things we are getting from the ecology? Ecosystem is known as ecosystem services, and there is an estimate that $33 trillion, which is nearly twice of the GNP. You know, GNP, GDP, we have studied this in economics obviously. So ये हमें फ्री में मिल रहा है. There is an estimate. So this is all about the chapter. Hope you have understood the chapter in the entire manner. थोड़ा देख लेना, बुक में important points मार्क कर लेना, उतना टफ नहीं है. So in the next portion we will go to chapter 15. ठीक है, छोटा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा. Hi everyone, now let's start chapter 15, biodiversity and conservation. छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो जाएगा. Facts based चैप्टर है ज़्यादा. Remember the name of Edward Wilson, who actually coined the term biodiversity. ठीक है, एक sociobiologist. Then we have kinds of biodiversity like genetic level biodiversity, species and ecological. What is genetic biodiversity? Suppose obviously African people, Indian people, Russian people, European people, they're all human beings, same species, but we don't look the same. Why? Because we have genetic diversity. Same species है, हाँ. एक है species diversity. Suppose in India we have a tiger, deer, human, so much species, so that's species diversity. The ecological is in India, suppose we have this desert, this sea coast, ये सब biome है ना, rainforest, deciduous, we have just studied it in this video only. Black ही सही है. I have studied this, so let's see the important lines. I was telling in this video that Rauwolfia species, Vomitoria, this is the source of reserpine, which is a medicine, and India has more than 50k different strains of rice and 1000 varieties of mangoes. ठीक है, this is the genetic diversity. तो species diversity, western घाट्स में frog, amphibian ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से. ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाइज ऐसा क्वेश्चन आता है. Then ecological diversity, obviously as India lies in the tropics, it has more diversity than any Scandinavian country like Norway, Sweden, Finland. This is important as this is from some IUCN 2004. इन्होंने बोला था कि 1.8 million species है plant और animal का. But there are some other estimates. Obviously you don't need to remember the estimates. See, this is now very important. There are more species of animals than plants in our planet Earth. Very important. 70% है animal और इन 70 का 70% है इंसेक्ट. ठीक है, और जो प्लांट होता है
वो है 22%, ग्रेटर देन 22%, 22% प्लस, ठीक है, पढ़ लेना ये। और ये 70% ऑफ द टोटल है insect. So if there are 10 animals, 7 will be insect. And the number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fish, amphibians, reptiles, mammals. Very important. इस लाइन से ही क्वेश्चन आता है. If you see the previous year trends. Procarates, the research is still going on. We don't need to focus. This line is extremely important. 2.5, 2.5, 4, 2.4% है हमारा land area with respect to all the world land area, and we have 8.5% of global species biodiversity, global species diversity, and India is one among the 12 mega countries of the world. Okay, ठीक है. Now, question has been framed from this part. In tropics, we have more number of species than the temperate region. Why? Because of the solar radiation. यहाँ पर टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट, आई मीन सीजनल जो चेंज होता है ना वो कांस्टेंट रहता है. मतलब सीजन तो चेंज होता है बट टेम्परेचर की तरह उतना ग्लेशियर काइंड ऐसा नहीं है. सो स्पीसिएशन जो प्रोसेस होता है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन स्पीसिएशन, यू कैन वॉच इट. वो बहुत अच्छे से हुआ. अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स मतलब प्रेजेंट देखो आप, तो ट्रॉपिकल रीजन इज़ द बेस्ट, एंड दिस इज़ द लैटिट्यूड. If you are going to the world map now, world map, you will see the countries that belong to the tropical zone, that belong to the temperate zone. Such questions might be framed कि किसमें ज़्यादा स्पीशीज़ होगा, कितने कम स्पीशीज़ होगा. सो ऐसा आ सकता है. इस साल एक आया था ना लक्ष्मीकांत से पॉपुलेशन वाला कर्नाटक आंध्र प्रदेश. तो क्या कितना राज्यसभा में जा सकता है, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं. So in that question you should know the population of the states. The basics are important. They will not ask directly, but you should know that before going to the prelims exam. Now let's see. And India has more than 1.2k species of bird. This is okay. These are also written. Fine. I have mentioned the speciation, this environments and solar energy. And this is a little bit of mathematics, not important. I have mathematics background, that's why I have seen it. You can read this about this regression coefficient if you want. Humboldt ने किया था, देख लेना एक बार. I am not discussing in this video. The importance of species diversity to the ecosystem. हाँ, जितना ज़्यादा species diversity होगा उतना अच्छा एक ecosystem के लिए. You have to know the definition of stable community. So what is a stable community? Should not show too much variation in productivity from year to year. It must either resistant or resilient to any change, और invasion species, alien species का invention से उसका कुछ नहीं होना चाहिए. ये क्या प्रॉब्लम होता है मुझे पता नहीं. ठीक है. Now let's go to the next topic. So this is the definition of stable community, might come in exam. Now ये hypothesis वगैरह नहीं देखने का. Loss of biodiversity इतना कुछ याद नहीं रहेगा, मत देखना. If you are interested you may. And yeah, I was telling you, amphibians appear to be more vulnerable to extinct. Very important. Now this is not important. Sixth extinction has already came in exam in previous year paper. ये man made है. इसके पहले हम फॉसिल का ना स्टडी करते हैं और हमने देखा है कि फिफ्थ मास एक्सटेंशन हो गया है. बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू एज पर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स वी हैव फाउंड दैट. Now it's ongoing sixth extinction. It's man-made. It's written here, which is 100 to 1000 times faster than the previous extinctions. अगर ये चलते रहे तो half of the
खत्म. हाँ, 100 years में half of the diversity you're seeing will just get lost. Now here important one is habitat loss fragmentation. Habitat loss and fragmentation वो कुछ नहीं, deforestation के वजह से we have 6% of rainforest in the world. Amazon rainforest, it's giving 20% of oxygen to the entire world. It's in South America, okay, and it is also known as the lungs of the planet. Why it's been cut, that is also important. One is the grazing for the beef cattle, for the conversion of grassland for the beef cattle, and the most important thing is the soybeans cultivation. This question might come, ठीक है, थोड़ा इनसाइड भी हो जाता है, कभी कभी आ सकता है. Then let's come to alien species invasion. एक एग्जांपल दिया हुआ है. I have already cited the example of that in Australia what happened, that cactus, फिर मौत आया था, इनका मौत हो गया फिर कैक्टस खा गया, ऐसा हो जाएगा. फिर ये वाटर हायासिंथ इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. हाँ, इम्पॉर्टेंट है. देन मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, उतना टफ नहीं है. आप एक बार if you just read for one time, there is no such concept in this chapter. Just you have to remember the statements, which is really important. वो जो facts है ना 100,005 वो नहीं है, ये important है. 25% of drugs are made from plants which are used in drugs. 25% of drugs are made from plants which are sold worldwide in the market. और 25K मतलब 1000, पता है ना, ये यूट्यूब का ज़माना है, सब आजकल सब कुछ पता चल जाता है. Plants contribute to the traditional medicines used by the native peoples around the world. This term will one day surely come in exam, bioprospecting. I don't know in which year, but this term will surely come. It means you just dwell with the molecular, genetic and species level of diversity for products of economic importance. ठीक है, काइंड ऑफ स्टडी है बायोप्रोस्पेक्टिंग. कैसे याद रखोगे? सी बायो PRO प्रोस्पेक्टिंग, PR और प्रोडक्ट में भी है. प्रोडक्ट अगर MCQ में ये देखो और प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हाँ पढ़ लेना, कुछ और भी वो ऑप्शंस बना देंगे फॉर श्योर. सो ये प्रोडक्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है. So you just study about this molecular, exploring molecular, genetic and species diversity for products of economic importance. That is bioprospecting. Very important for prelims. Any year it might come. So I have told you this. ये तो अजीब दास्ता है, ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये जहाँ भी शुरू होता वहाँ भी ख़त्म. I hope you know what is a biological hotspot. Class 11 NCERT last chapter एक मैप दिया हुआ है वर्ल्ड में, प्लीज़ देख लेना. 34 बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 3 है इंडिया में. व्हाट आर द 3? वन इज़ इंडो बर्मा, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका. सो इंडिया हैज़ 3 biological hotspot, biodiversity hotspot. What is a biodiversity hotspot? It is the places where we conserve the animals, ठीक है, which is special to the area only. Suppose वेस्टर्न घाट में कुछ एनिमल है, वो पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है. श्रीलंका ये एक ही नाम दिया हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट नाम याद रखते हैं ना. रीजन तो सेम ही है ना वर्ल्ड के परस्पेक्टिव में. So species confined to that region and not anywhere. जहाँ शुरू वहाँ ख़त्म, endemism. Now I have told you this 34 and 3. Not a great chapter in terms of concept, but statement बहुत है. ठीक है. And go to the updated list. Let's go to the updated list. कितना बायोस्फीयर, ये तो हम लोगों को PhD करना है. कहाँ कौन स्टेट में है, क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर और सेक्रेट ग्रुप कहाँ मिलता है. थैंक्स टू द ट्राइब्स देयर हु आर स्टिल फॉलोइंग इट. एंड
वी हैव क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, ये थोड़ा पढ़ लीजिए विकिपीडिया से, कोई क्वेश्चन आ सकता है साइंस एंड टेक में. सो हियर द चैप्टर एंड्स. So thanks for watching this chapter. In the next, why this is happening? So thanks for watching this chapter. I hope you haven't enjoyed it. I also haven't enjoyed it because this chapter really doesn't have any concept. You only have to memorize the facts. So ये परसेंटेज वगैरह 12 का डाइवर्सिटी जो कंट्री है उनका नाम भी देख लेना थोड़ा. ये क्वेश्चन आया है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट वाला, जो ट्रॉपिक में आता है, टेम्परेट में होता है, प्लस वो हिली एरिया में. एक नेशनल फॉरेस्ट वाला था जो बोल रहा कि 33% होना चाहिए लैंड में, वो भी देखना है हमें. ठीक है, देख लेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अप टू दिस. In the next slide I'm going to discuss the last chapter. Okay, thank you. Hi everyone, now welcome to the last chapter, chapter 16, environmental issues. Another very boring chapter, but we have to read. So now what is population? It is any undesirable change. ठीक है, जो पॉल्यूशन करते हैं उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स. एक एक्ट है, ये तो हम पढ़ लेंगे कोई स्टैंडर्ड बुक से. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत पढ़ना है ये सब, इस बुक में नहीं है. सो एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल. एयर पोल्यूशन इज एक्चुअली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ मीन्स it actually purifies the air with the help of electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator. Okay. And 99% of the particulate matter PM in the exhaust form okay, these get purified 99%, like light boy kills 99% germs. This question came in 2023 prelims paper. According to central pollution, ये जो बोर्ड वगैरह है ना, IUCN, ये सब अगर कुछ बोले ना वो मार्क कर लेना. According to Central Pollution Board Control Board CPCB, particulate size of 2.5 micrometers or less in diameter, PM 2.5, are responsible for causing the greatest harm to human health. Very important. 24 में नहीं आएगा, आ भी सकता है. ठीक है. सो PM पार्टिकुलेट मैटर पता है ना, छोटा पार्टिकल होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, उनको बोलता है पार्टिकुलेट मैटर. सो उनका साइज होता है माइक्रोमीटर. कितना छोटा, इससे लेस अगर हो तो वो हानिकारक है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर प्यूरिफाई नहीं कर सकता. So automobiles are a major cause for atmospheric pollution, at least in the metro cities, also in any city. This is again important. Lead free petrol or diesel should be used, and we have catalytic converters. What are they? They are used in automobiles to reduce pollution. So a question might come that what are the materials that are used in catalytic converters? They're platinum, palladium, रोडियम. ठीक है, ये तीनों याद रखना. PPR, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम. सच क्वेश्चंस माइट कम. एंड चलो ये लिखा हुआ क्या करते हैं, ये किस किस में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा देख लेना. देन नॉइज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन. द एयर Prevention and Control of Pollution Act 1981, that was amended the year 1987 to insert that noise is also a part of air pollution. ठीक है, good. ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, नॉइज़ का एयर पोल्यूशन का क्या है, पॉल्यूटेंट है एयर का. सो NCERT में लिखा हुआ है तो होगा. नाउ
ठीक है, ये दिल्ली का कुछ केस है, लिखा हुआ है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू में, बिकॉज देयर इज़ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिल्ली इन मेंस एग्ज़ाम। बहुत साल पहले आया था कि मेट्रोपॉलिटन है, कोलकाता भी है, महाराष्ट्र भी है, तो इसमें पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ टू आंसर सच क्वेश्चंस। गूगल तो है। नाउ यू हैव CNG गैस। Compressed natural gas, so it is better than diesel if we use in automobiles. So there is pros and cons written, please read it. Noise, ठीक है, चलो तो टफ नहीं है। पाइपलाइन एक थोड़ा टफ होता है, ये पाइपलाइन मेंटेन करके CNG ट्रांसफ़र करना, वो तो ठीक है। Now, our target to use sulfur in diesel and petroleum is 35%. यूरो 3 ये बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, नहीं आएगा तो मुझे मानना नहीं। ये तो PhD कराएगा तुम्हें, लिखा हुआ है बहुत कुछ। इफ़ आई इंटरेस्टेड इन दिस ग्राफ्स यू में BOD COD एक पढ़ लेंगे हम किसी बुक से। और हाँ, यूट्रोफिकेशन पता है, सपोज देयर इज़ अ पॉन्ड और लेक, यहाँ पर तुम सीवेज डाल रहे हो, इसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट सॉल्ट्स होता है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स द न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज, ये सब अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स है फॉर सम algal bloom, phytoplankton alga, phytoplanktonic free floating alga, something like that. So here see it is written, ठीक है। ये सब के लिए एक वाटर हायासिंथ होता है, एक साइंटिफिक नेम है, मुझे तो EC ये याद रहता है। सो वाटर हायासिंथ फ्रॉम दिस इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। What will happen if this algal bloom will increase in the spawns, and the obviously one is pollution, the fish will get killed, fishing industry will just diminish if such things really continue. ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन आई हैव कवर्ड, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। बायो ये है बायो एक्यूमुलेशन, ये मछली खा रहे हैं, जब हम ट्रॉपिक लेवल में बोलते हैं ये, देन वी कॉल इट बायोमैग्निफिकेशन। I have discussed in the previous videos. So eutrophication I have told you, increase in the nutrients of nitrates and phosphates in the water. So this line is important कि एक young lake is cold, clear and supporting life. चलिए, और जो ह्यूमन से यूट्रोफिकेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड और कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। और नाइट्रेट और फॉस्फेट तो है ही। चलो, ये एक जगह का नाम है, मैपिंग में पूछ सकता है कहाँ है, इसलिए मार्क किया है, बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इकोसान टॉयलेट्स किस स्टेट में हो रहा है? केरला, ठीक है। श्रीलंका देख लेना, बट इंडियन पर्सपेक्टिव में केरला इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तमिलनाडु में जो रेन वाटर प्रिजर्व करना कंपलसरी है, ह्यूमन जियोग्राफी बुक में लिखा हुआ है, क्लास 12, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ मिला जुला के क्वेश्चन पूछ लिया। सो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का 50% इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में आता है फॉर रिसाइकलिंग। वेरी इम्पोर्टेंट, 50% or more than 50%. Now agro, their effect, I haven't found an important line. So Chernobyl, 3 Mile Island, a question might be framed like that: in out of the following places, which of the following had a history of nuclear disaster? So these two options might be given: Chernobyl, 3 Mile Island. Okay, there is a place, Fuji, I forget the case, so Fujiyama, something like that. There was also a case, so we'll study about it. And yeah, this is important कि 500 meter deep in ocean. You have also studied कि no light can reach here, it's completely dark. So
You can have an analogy that 500 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में हम न्यूक्लियर वेस्ट को डीप करते हैं. सो देयर आर सम rebels for that. It's written here. ग्रीन हाउस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. भाई मैं नहीं पढ़ाऊँगा, खुद देख लेना, बहुत ईजी है. आप जानते हो कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड आज का टेम्परेचर विल नेवर एग्जिस्ट. शायद वही अच्छा होता. और जब से पार्ट, सो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है बड़ा एवरेज टेम्परेचर. और आपको अगर मैगजीन आप पढ़ते हो तो 1.1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री ऐसा जब टारगेट है तो नो द थिंग्स. Clouds and gases reflect 1/4 of the incoming solar radiation. मतलब 25% ही क्लाउड और गैसेस से रिफ्लेक्ट होता है. +11 जियोग्राफी अगेन, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. और 2% जो ग्लेशियर से रिफ्लेक्ट होते हैं. फिर हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सर्फेस. वी हैव स्टडीड दिस इन जियोग्राफी बुक. आई एम नॉट टेलिंग इट. No. And if you haven't studied physical geography and seeing this environment video, then I think you are on a wrong track, because that will clear your basics. We have bad ozone and good ozone. Bad ozone lies in troposphere because havoc, very bad for breathing. And good ozone lies in the stratosphere. You know what does ozone layer do? I'm not telling you that. This is important. And yeah, this line. The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in the terms of Dobson unit. A question might be framed in prelims. Dobson unit क्या होता है? CFC आपको पता है क्या करता है, क्या नहीं करता है, जाता है क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे होल होता है या पर ओजोन होल. दिस वन इज इम्पॉर्टेंट. UVB कि जितना UVB से लेस है ना वेवलेंथ, वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है बाय अर्थ एटमॉस्फेयर. बट UVB से क्या होगा, वो DNA को म्यूटेट कर देगा, मतलब म्यूटेशन हो जाएगा, जीन म्यूटेशन. इट्स हार्मफुल फॉर DNA, इट्स हार्मफुल फॉर आइज, कॉर्निया अफेक्ट करता है. एक स्नो ब्लाइंडनेस होता है UVB की. सो UVB इज हार्मफुल फॉर अस. And there is a related protocol which is Montreal protocol. इतना आसान क्वेश्चन तो अब नहीं देता, पर एग्जाम में देता था कि ये प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है. सो ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिलेटेड है. Now this question have seriously came in many times in UPSC. This you remember that urbanization is a great cause for desertification. ठीक है. Now अगर improper irrigation हो तो ये वाटर लॉक कर जाएगा. ये क्रॉप फील्ड है, वाटर लॉक कर जाएगा. सो इफ देयर इज वाटर लॉगिंग, देन अगेन न्यूट्रिएंट्स सॉइल, फ्रॉम सॉइल दिस सॉल्ट्स विल कम, phosphorus and kind of eutrophication will happen, I would say. So that is not at all good for the crops. Hence that is what written. And yeah, it actually came with the advent of the green revolution. Again, what is important, 40% of the forest have been lost in the tropics compared to 1% in the temperate region. Another important line. Common sense भी लगा सकता है कि we have studied that tropics में ज़्यादा diversity है तो loss भी ज़्यादा होगा. Yeah, I was telling you this in the last video कि National Forest Policy of India has recommended 33% of forest cover for plains and 67% for hills. अब झूम कल्टिवेशन जियोग्राफी में हम पढ़ चुके हैं. अमृता देवी, वो विष्णु जो रिवोल्ट हुआ था ना, एक स्टोरी भी है. कोई बोलता है ये सच है, कोई बोलता है सच नहीं है, मुझे नहीं मालूम. बट रियली हैट्स ऑफ टू हर. शायद सच ही है, आई रियली डोंट नो. But yeah, Amrita Devi Vishnoi Wildlife Protection Award, and there is Chipko movement that motivated the joint forest management.
It is a very famous this चिपको मूवमेंट, पेड़ के साथ ऐसे चिपका रहना, 74 में हुआ था, फिर 80s में आया था JFM, गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज एक साथ काम कर रहा है. That is very important. We'll read in details when we'll read something about forest. Now the summary is given, and that's it. Thanks for have your patience, and if you have really watched the entire video, because last two chapters are not at all conceptual. Ecosan Kerala, not at all conceptual. The first two chapters are conceptual, last two chapters are statement based, so it might be a little bit boring for you, but I hope I have shown you the important lines that might be asked, and if you are able to find some lines, you may apply the highlighted to that lines. Okay, thanks everyone for watching the video, and the 4 chapters are hence concluded and completed. Thank you.